क्या चल रहा है लाइफ में प्रकृति अभी? वही फाइनेंसेस जोड़ रहे हैं कंचनजंगा के लिए। 15 लाख के आसपास कुछ तो होता है, 16 लाख के 17 आसपास। तक मतलब राइट। शेरपा बोनस राइट। टिप्स वगैरह मिला के 17 के आसपास खर्च आ रहा है. Then it just picked up, like suddenly it just picked up, and like there were people who were sending like $50, $100, writing so long notes, like just saying that you go for it. What was that point when you decided to be a vegan and why? And they said कि हमारे यहाँ बच्चू पैदा हुआ था, एंड हमने उसे मार दिया. बट एवरेस्ट जाने से पहले मेरी डर वाली हालत थी कि ओ शिट अगर कुछ हो गया तो क्या करूँगी. आई टोल्ड माय शेल्पा कि मैं नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रही है, दाई मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, 7,100 मीटर है, ऑक्सीजन नहीं यूज कर रही हूँ, दुनिया के सारे लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, मैं बिना ऑक्सीजन के हूँ. हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी. कैसे हो आप लोग? आई होप यू guys are doing well. So in this episode we have with us a very dear friend of mine, a very special guest, Prakriti Varshney. She is a mountaineer from India who summited Mount Everest in 2022 May, and in the process she became the first female vegan climber to ever summit Mount Everest. Before that, she has summited around 9 or 10 mountains in the Indian Himalayas. I have been following her journey for quite some time, and I've seen the struggles that she went through, the ups, the downs. So I thought that okay, let's invite her and let's hear her story out, because the story of every human being can teach us something or the other which can take us to the next level. So without much further ado, here is Prakriti, all of you. एक टाइम था जब इंटरव्यूज होते थे, अब इंटरव्यूज नहीं हो रहे. वक्त बदलता है. स्पीकिंग टू पीपल फ्रॉम ऑल एराज ऑफ लाइफ, बहुत सीखने मिलता है मुझे तो पर्सनली with एज अ. every with every person you learn something. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो अभी ऐसे कुछ प्लान नहीं किया मैंने, कुछ नोटबुक नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग व्हेनेवर यू आर रेडी. नो आई एम रेडी. मेरे पास कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैं इतना इधर उधर में फंसी हुई थी कि मैं बस हाँ बोल दे कर लेंगे. चलो ऑसम. सो स्टार्ट करते हैं फिर. तो हेलो एंड नमस्ते प्राकृति, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ अबाउट यू? इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वी हैव मेट. यस, वी मेट लास्ट व्हेन आई वाज इन मनाली आई थिंक. उसके बाद नहीं मिलना हुआ है. Been almost what, 6-8 months. 7-8 months, yes. या. क्या चल रहा है लाइफ में प्रकृति अभी? वही फाइनेंसेस जोड़ रहे हैं कंचनजंगा के लिए. ओके, सो इट इज 20 March when we are Yeah. recording this podcast. कब Yeah. निकल रहे हो आप? So I'm thinking of leaving around 7th या 8th को नेपाल. बट उसके लिए अभी भी वही, हर क्लाइंबर हर माउंटेनर की लाइफ में वही सेम सिचुएशन है कि पैसे कैसे इकट्ठे होंगे. तो आई एम स्टिल लाइक शॉर्ट ऑफ अबाउट 4-5 lakhs. तो आई एम बस. थिंकिंग बस. हाँ. अरे मैक्सिमम तो हो गया है ना जमा. बट देन वो जो अरेंज हुआ है वो भी बहुत मुश्किल से हुआ है ना. मतलब यस. ऐसा नहीं कि आसानी से हो गया. यस. तो वो सोच के लेट्स सी. आई एम स्टिल ट्रेनिंग. ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, जा पाऊं चाहे नहीं जा पाऊं. देखो, एक बार ना 30-40% रकम इकट्ठा हो जाती है ना, हम्म. फिर मन मान लेता है कि अब तो जा रहा हूं मैं, कुछ भी करके पहुंच जाऊंगी. तो अब तो आपका तो सिर्फ 4-5 लाख बाकी है आई थिंक. कंचनजंगा के लिए 15 लाख के आसपास कुछ तो होता है, 15-16 लाख के 17 आसपास. तक मतलब राइट. शेरपा बोनस राइट. टिप्स वगैरह मिला के 17 के आसपास खर्च आ रहा है. सो अब तो हो ही जाएगा फिर. अब 4-5 लाख तो यहाँ वहां से हो जाते कहाँ, अरे कहाँ कहाँ से करके इतना हुआ है. अभी देखते हैं, चलो. अभी स्टिल आई हैव होप कि हैं. कहीं से तो कोई पैसा देगा. Want to ask you this because I think a lot of people have this perception about you, especially. They might not have this perception about me or some other, like most other mountaineers in India. Why I'm saying this? Because we have less following sort of on Instagram in comparison to you. So people always think, like, I also used to think when I did not know you that, oh, you have over 100,000 followers on Instagram and you are doing this brand deal, that brand deal. So why are you still struggling with money even after you've climbed Everest? So this is, I know the answers, but people might think about this. So what do you have to say about that? इंडिया जैसे कंट्री में माउंटेनियरिंग जैसी फील्ड बहुत नहीं है. मतलब पीपल स्टिल डोंट नो व्हाई वी आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स इन द फर्स्ट प्लेस. टू मेक एनीबॉडी अंडरस्टैंड कि
कितना इम्पोर्टेंट, कितना क्रिटिकल एंड कितना लाइफ चेंजिंग है माउंटेनियरिंग, है ना. Plus, it is physically very taxing. So, to make anyone understand why you are doing it, and if you have a purpose to it, it's so hard, and people still don't understand at all. तो वहीं पे brand से I am in touch with a lot of brands. Like if you say traveling के लिए कोई पैसा चाहिए, तो I will not struggle. But especially for mountaineering, wherein people don't see any scope, people don't understand brand integration into a climb, तो उसमें आप फंड रेज कर ही नहीं सकते. अब रही बात पैसा नहीं होने की लाइफ में, एवरेस्ट के बाद भी आई हैवंट गॉट एनी, लाइक आई वुड से नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स एनी माउंटेनियरिंग एट ऑल. लाइक अभी भी मुझे ट्रैवल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही आते हैं. मेरा नाम है तो मेरा नाम अभी भी ट्रैवल फील्ड में है, माउंटेनियरिंग फील्ड में नहीं है. तो आई डू अर्न, बट आई डोंट अर्न इनफ to climb a mountain like an 8,000 meter because it's so expensive. Like 2 महीने के लिए 20 लाख का खर्चा हो रहा है. Like how on earth, how on earth can somebody do it? And like the way I live, I cannot be in one place because मेरा काम ही travel है. So I have to have every month I have to travel also. उसके लिए भी पैसा चाहिए. फिर 2 महीने 8,000, 20 लाख कहाँ से आएगा ना. मतलब मैं कमाती हूँ. I'm not denying the fact that I earn well, Yes. but not for mountaineering, not Right. yet mountaineering. Right. Same here. I mean, I can live a very good life if I want to, but then every year to at least spend 15, 20 lakh rupees, it's like, woof, impossible. No, people actually save up for their cars, for their houses, for their education, or maybe kids' education, but they don't save for mountains. At least at the moment in India, nobody, like hardly 1% would think of, saving like 15, 20 lakhs every year. So, how did you raise money for Everest then? What was your Because, journey? so for me, I didn't had any money. When I started the thought of finally like coming down that I want to climb Everest, तब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था. मैं just आमा डबलम climb करके आई थी, and I had this hope that I really want to go to Everest, but I know कि Everest कितना महंगा है. तो मैंने वो hope बहुत कम थी, but पैसे बिल्कुल नहीं थे. होप कम थी, डेफिनेटली आई डिडंट हैड हाई होप्स आल्सो, बट पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे. तो एक दिन आई डोंट नो हाउ कम आई जस्ट एंडेड अप लुकिंग एट अ फेसबुक फोटो व्हिच वाज ऑफ एवरेस्ट, एंड माय ब्रेन जस्ट गॉट लाइक दिस आई मीन दिस लाइक कॉलिंग कि भाई अब कुछ और नहीं करना, अब यही करना है, इस पे जान लगानी है. So I started thinking about it, and like I started putting all the efforts. I had a lot of people who I called saying कि यार किसी तरह कोई हेल्प कर दो, कोई इनपुट दे दो, कुछ कर दो. खैर इतना कुछ हेल्प नहीं मिला, बट इवेंचुअली मैंने दिसंबर में फंड रेज के लिए मिलाप पे डाल दिया. एंड मिलाप पे मैंने पूरा अमाउंट डाला था पहले. आई थिंक मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज, नो. सो आई वांटेड टू डू एवरेस्ट एंड लोटसे टुगेदर. सो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का अमाउंट डाल दिया, लाइक 40 लाख रुपीज. मैंने दोनों के लिए ही फंड रेज करने की कोशिश की. आई डोंट All नो right. व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय ब्रेन दैट टाइम, बट आई ट्राई टू आई थॉट कि शायद रेज हो जाए, यू नेवर नो. तो मैंने 40 lakhs डाला. पहले 2 दिन तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था. तीसरे दिन से इट जस्ट ड्रॉप्ड. लाइक पीपल वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड एट ऑल. लाइक दे वर 1 लाख के बाद कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था. फिर किसी दिन मुझे, थोड़े दिन के बाद ऐसे ही चलता रहा, नहीं कुछ रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मुझे मिलाप से कॉल आया, एंड दे आस्क्ड मी टू लोअर डाउन द प्राइस. दे सेड कि इतना बड़ा अमाउंट रेज नहीं हो सकता, यू हैव टू गो डाउन अ लिटिल बिट. फिर मैंने उसको आई थिंक 20 lakhs किया था, थिंकिंग दैट आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉर एवरेस्ट एंड लोटसे टुगेदर एटलीस्ट, बिकॉज फर्स्ट वीक यू गेट दैट जील कि अच्छा पहले हफ्ते में इतना हो गया. पहले हफ्ते में 1 लाख हुआ, उसके बाद वो रुक गया. आई हैड लॉस्ट होप. आई जस्ट डिड लाइक 20 lakhs, and then it picked up again. Like when it picked up again, then I started putting all my efforts, and I went out crazy. I started training अच्छे से, and then I started reaching out to brands. Like every day I had to like sit at one place, laptop के सामने 10 बजे से 5 बजे तक. I was just doing this like office job. But कोई response नहीं आया. Eventually ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, and I could raise like
February तक I had raised about I think 8 lakh. 8 lakh was a good number 3 महीने के अंदर. Yes. It had like I had hopes कि मैं किसी तरह तो मैनेज कर लूंगी. फिर मैंने धीरे धीरे मेरे दोस्तों को पूछना चालू किया कि how much can you give me and then I can Mm-hmm. return you back in an year or two or whatever. Mm-hmm. Then a lot of people came forward. A lot of people actually gave me like ऐसे 1.5 lakh दिया और बोला कि whenever you want to give back you just can give back whenever. Some people gave 50,000, some people gave whatever Mm-hmm. they had like ample which I can return back anytime. Right. तो ऐसे करते 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 फिर मेरा जब मैं निकली थी घर से तो मेरे पास 26 लाख रुपीज हुआ था अरेंज, Wow. जिसमें से जो क्राउड फंडेड था वो था 11.5 lakhs. All right. एंड और जो अमाउंट था वो सारा मैंने बोरो किया हुआ था इधर उधर से कहीं कहीं से कुछ कुछ करके. यहाँ पे मैं एक चीज जो भी सुन रहे यंग लोग उनको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि more than 50-60% of the money you took on loan, Yeah. and that is how much you were prepared to mentally just go no matter what. No, अभी I just went crazy. It just exactly. was like I couldn't think of anything but just have to do this. Like, You see, that's all it takes. People, yeah. people they think too much and actions are very little towards it. You just Like, better start taking actions, and then you will get into that zone where you'll think कि साला अब तो do or die, चाहे हाँ, लोन लेना पड़े या किडनी बेचनी पड़े, अब तो बेच देंगे, लेकिन जाना तो है ही. जाना मतलब एक बार आपने सोच लिया लाइक फॉर एग्जांपल मेरा दिसंबर में जब मैंने शुरू किया था तब आई कुडंट हैव दैट मोटिवेशन ऑल टुगेदर टू Hmm. इवन पुश Hmm. माई सेल्फ टू दैट लिमिट. बट like for I don't know where it just came that zeal of just trying and putting all my efforts, Absolutely. and it kept like working right for me. And when I left, no, like I had 26 something and I just left without even thinking कि ये कैसे होगा और 4-5 लाख जो चाहिए वो कैसे करूंगी. But I left, and then eventually some people called me when I was in Kathmandu. पता नहीं मैं कुछ कर रही थी and suddenly I just got a call international roaming पे and I picked up. I don't know why I picked up, and this girl said, oh, I'm from this brand and I want to send you 1 lakh rupees. And I was like, what? And they did not expect anything Hmm. from me. I wouldn't name the brand because they didn't want to get their Mhm. name mentioned, but then it was just so generous of them to just send me 1 lakh, and they eventually, like within 24 hours, they sent Yeah. 1 lakh. I Yeah. was just See, like, see, see, that's what I'm saying. 4-5 लाख रुपीस कंचनजंगा के लिए बाकी है. जब मैं कहता हूँ आ जाएंगे, ऐसे ही आते हैं. Because same for me when I was going for Annapurna expedition, I had Mhm, only 50% of the amount with me, literally. And I had promised the organizer that I will pay him when I land. I was mhm, lying. Literally, I was lying. But I, mhm. I knew You how knew I. in your gut, you knew. And in the flight, the person sitting next to me, he saw this ring of Sadhguru and he started speaking about him. And then we connected. And then he was like, oh, you are going on this expedition and you are worrying about money? I'm like, yes, I have to. He's like, no, no, you don't worry. I'll sponsor your expedition. I'm like, अरे आपको मेरा नाम भी नहीं पता है. उन्होंने बोला, I don't need to know your name. I can see in your eyes that you are not lying and you are doing something with so much intensity and I like intense people. लैंड करने के 3 घंटे बाद पैसे अकाउंट में आ गए. Whoa, man. 2 साल मैंने घिसाई अपनी, कुछ नहीं हुआ, कहीं से पैसा नहीं आया. ये फ्लाइट में तो ऐसे I हो get, हो, हो जाता है यार. तो यहाँ पे yeah, true आई that. वांट टू ask you one thing, like एक you raised a lot of amount on crowdfunding. Mm-hmm. So I get a lot of questions on my Instagram, on my YouTube, that how to do crowdfunding, because Mm-hmm. it is easy to set up a link, but Mm-hmm. to make it reach people, that Mm-hmm. is the hard part. So what kind of efforts went into crowdfunding? I mean, what did you specifically do to reach out to so many people? Because I was following you back then, and your crowdfunding campaign was like everywhere. So that Okay. just does not happen like that. It takes effort. So Mm-hmm. what kind of effort in, if you can explain that to people here? हाँ तो मैं मतलब एक पॉइंट था जब मैं ना इमोशनली इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी. लाइक Mm-hmm. उससे पहले मैं हमेशा नॉर्मल तरीके से शेयर करती लाइक एवरीवन वुड डू राइट. Mm-hmm. बट एक दिन इतना इमोशनली एग्जॉस्टेड थी मैं कि मैंने अपनी स्टोरी लाइक हाउ आई वुड फील हाउ आई एम फीलिंग एग्जैक्टली एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज
to not just physically train yourself, you have to physically, then mentally be strong, then you have to financially arrange everything, and it's just like out of my capacity. I just wrote my heart out. Like, to be honest, I was just like, I was literally crying and writing it out. Mm-hmm. Then it just picked up. Like, suddenly it just picked up, and like there were people who were sending like $50, $100, writing so long notes, just saying that you go for it. And it just gave me that needed boost, needed Mm. boost of, I don't know, luck and whatever. But it was just like, it just boosted my confidence, my, it made me feel really good. Mm. And then I kept sharing how I felt. Like every day I would go on Instagram, update how I'm feeling and what is the progress. And yeah, basically engage with your donors. Like Mm. whoever is donating, they are donating for a purpose. Like maybe there are people who want to go for mountaineering but they can't, so they are Mm. like, adding up to your dreams. The ones who are like, Mm. there are so many good people out there in the world. It's just so beautiful. Mm. With crowdfunding, I realized that, oh my God, there are so many people who are looking up to me every Mm. day. Yeah, I think sharing your personal story is a game changer. I think the key here is that if you are speaking from your heart, only then it will reach the hearts of people. Yeah. People are very smart. They can see through something if you are just writing it down as a marketing campaign or something nonsense, very, very dry, no emotions in it. People see through it. People Yeah, see through like the you have bullshit. to you have to tell your story like very truthfully. Like Yes. you tell that, like I used to wake up at 4:30, so I used to tell people that I'm waking up at 4:30 and I would put Hmm. a story of 4:30. So Hmm. then people would understand how much efforts I'm putting in to do this. And Hmm. there were people, like so many people who could relate. When I did Everest, no, there were people who were just saying, "Oh, we have donated to her fundraiser. She has made it to Everest." And Wow. it was just a beautiful thing to know, right? Hmm. Like somebody sending me 500 bucks, 1,000, 2,000, and then they can say that, "Oh, we help Prakriti," Yes. like Yes. it's a small amount, but then you have this, Yes. you can say that you have Yes. helped me. Yes. Yes. Awesome. Awesome. What's with your hair? Oh, I went to Africa and got this done. Uh-huh. I saw your story and I was like, okay. No, I wanted to look like, no, like an African. So Mm-hmm. eventually I was so like my I was so tanned also, and then I got this done also. So eventually when I was at the airport, people were not believing that I'm not a local. You blended right in. Yeah. So I was how was Africa? You submitted three mountains there? Four mountains? How many? Three? I have submitted three Three mountains, mountains and there. Which were they? so I went to the highest mountain, Kilimanjaro, Right. and then second highest, Mount Stanley, which is in Uganda, All right. and then third highest, Mount Kenya. I am Okay. I am confused between two because both of them are 5,000. Okay. So Okay. confused कि second कौन सा third कौन सा है, but That's ऐसे okay. तीनों mountains किया, Right. Uganda, Kenya, and Tanzania. Okay. How was it there in Africa? All the mountains are so different. Like even from Kenya to Mount Stanley was so different. Like Different how? Kenya was like rocky and so windy. Like even at 5,000 meters, I was freezing. Like I was freezing. I've not felt that sort of wind on Everest also. I was just freezing badly. Oh. Then in on Stanley, we had glacier. Like उधर क्या बोलते हैं केनिया में there was no glacier at 5,000, but इधर Stanley में there was this big glacier on like 4,800 meters, and it was we experienced almost all sort of weathers in just 5,000 meters, like from very hot to like rainy to like dry to like Hmm. snow. And then Kilimanjaro is super like very gradual, but then one day you just pick up the altitude and everybody around you was like into this AMS state wherein they were just speaking anything and everything. Oh, And really? it was like a first climb wherein there were so many people around me.
So it was kind of hard for me to get along Hmm. with everyone. But then, yeah, like all three mountains were so different from each other in a lot of ways. Okay, beautiful. I mean, I'm planning to go there next year in Africa and to lead a few Yes. groups to all these same peaks which you told. I'm really excited because I saw your stories and it's like a completely different part of the world which is so unique in its own ways and so bloody beautiful, yeah. Yeah, because I didn't want to go and just travel because traveling at the moment has become so easy and accessible to everyone. Like, if you have money, you just can go anywhere in the world. Hmm. And climbing for me is still like very new, and I wanted to show this part of the world to people wherein they can also think about going to other places and not just doing the random touristy thing wherein only one part of the community is earning and not others. So when I Hmm. went to this mountain called Stanley also, Mm-hmm. there were a lot of people, the guides and the porters, they were just thanking me for coming because this is their income. Ultimately, they are Wow. also earning through that. So giving Wow. them employment is one of the reasons why I want to, climb these different mountains in different countries. Is it expensive to climb in Africa? I have no idea. That's why I'm asking. Not like Nepal, I would say, but Okay. yeah, like a little expensive. So lump sum to climb this mountain called Mount Stanley, Mm-hmm. I spent $1,200. No, Okay. sorry, no, 1,700. Sorry, Okay. $1,700. Which comes to like what I think 1.25 or Right. something like that. Right. Right. Into, Yes. Yes. yeah, Yes. and then you can give tips also Mm-hmm. and your travels also. So like मान लो 2 लाख के आसपास for one mountain. That is So quite not expensive. Like not very, but not very. That's what I said. Like it's like somewhere in the middle. right. You shifted to Manali a few years back. Where were you before that, and how did Manali happen? Why did you decide to live in the mountains? So for me, I was like always a very outdoorsy kid. Papa used to tell me कि जब हम बाहर जाते थे तो घर से घर आने का मन ही नहीं करता था इसका मतलब मेरे को बाहर ही खेलना होता था तो मैं हमेशा से ऐसी थी कि मुझे मुझे बाहर चीजें बाहर रहना बहुत पसंद था Mm-hmm. अब वो बाहर कुछ भी हो सकता था पहले बचपन में सिर्फ पार्क होते थे फिर इवेंचुअली धीरे धीरे थोड़ी बाउंड्रीज बढ़ी तो हम कहीं कहीं जाने लगे slowly it just kept going. I was doing this job, this shifted बिकॉज उसके बाद मुझे पता ही नहीं था क्या करना है मतलब पैसे कमाने हैं और खाना है ऐसे लाइफ हो गई थी कि क्योंकि पापा मम्मी मतलब वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड तो पापा मम्मी से पैसे मांगना वाज नॉट द ऑप्शन तो आई कुडंट ट्रैवल and I started doing this job wherein I had to leave home by what 6:30 7 o'clock because office dur tha. And then I used to work till like 7 o'clock and then come back home at 9. तो वो लाइफ ऐसी हो गई थी कि you don't have time for yourself at all. Like you just come home for like 3 hours and then it's just like a circle that you are just every day you are doing the same thing. So I didn't feel right after like 2 months when I had some money. I went on this one trip like for 3 days on a long weekend. Then I kept doing this for like every month. I would just take like one holiday and mix up with like Saturday, Sunday, and then just go. हर महीने 5 दिन का छुट्टी मांगना 6 दिन का छुट्टी होना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था एंड अब पैसे थे बट घूमने को नहीं मिलता था टाइम नहीं था. हाँ टाइम नहीं था तो मैंने रेजिग्नेशन दिया पहली बार तो उन्होंने बोला नहीं यू कांट जस्ट गो तो फिर मैंने बोला ठीक है फिर मैंने पापा को पूछा कि पापा मैं क्या करूं तो पापा ने बोला इफ यू हैव इनफ सेविंग्स एंड यू वांट टू गिव इट अ चांस do give it a chance like don't hold back yourself in a way that you regret yourself later तो मैंने उनका एडवाइस को मान लिया एंड आई गेव अनदर रेजिग्नेशन अबाउट जस्ट वीक और टू आफ्टर एंड देन उन्होंने रेजिग्नेशन तब भी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने बोला हम सैलरी बढ़ा देंगे फिर मैंने दोबारा सोचा ऐसे करते करते कुछ कुछ हुआ इवेंचुअली आई स्टेड टिल लाइक आई थिंक 10 months 11 months When was this? Which year? Which period was this? आई थिंक इट वाज 2015 Okay, okay, 15 आई थिंक okay. 8 years back. ऐसे करते करते मैंने 10 11 महीने काम किया आई हैड सेविंग्स ऑल्सो आई जस्ट टुक दिस वन ट्रिप टू स्पीति लाइक आई जस्ट वेंट विद माई बैकपैक विदाउट टेलिंग मम्मी एंड डैडी कि कितने दिन बाद आऊंगी आई जस्ट सेड ओ मैं जा रही हूँ एंड आई विल कम बैक सून
Mm-hmm. And they were like quite apprehensive, but they were quite supportive also. I would say they Mm-hmm. were not like कि oh नहीं 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 जाना या डरना है या कुछ भी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, डरने वाली बात तो कुछ ही नहीं थी. And I went to Spiti in winters. मतलब 2015 में स्पीति कैसा होता था, 2016 बिगिनिंग जनवरी. Right. Right. Oh, अब होम winters. स्टेज नहीं होते थे, बड़े ऐसे 3-4 होम स्टे होते थे, गाड़ियां नहीं चलती थी, रास्ते बंद होते थे, नेटवर्क तो था ही नहीं हमारे पास. नहीं. बीएसएनएल की 25 बार में एक कॉल लगती थी. तो ऐसे करके मैंने वहां पे 1.5 महीना गुजारा. लाइक Wow. 1.5 महीना. आई हैड स्पेंड वेरी मिनिमम अमाउंट. एंड आई यूज टू बिकॉज टू सेव पैसा, आई यूज टू वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स. मतलब मैं गाड़ियां लेती ही नहीं थी. कई बार तो ऐसा होता था मैं सिर्फ चल रही हूँ, पूरे पूरे दिन जा भी रही हूँ और वापस भी आ रही हूँ. ऐसे करके करती थी. इट जस्ट मेड मी फील राइट, लाइक इट जस्ट मेड me feel that I belong here. I belong Mm-hmm. out in the open. I just can't be in in a confined space. Mm-hmm. And then it just kept going. I just kept taking trips after trips. And then eventually in April, I had a ligament tear in my knee. मुझे मुझे ब्रेक लेने की जरूरत थी. डॉक्टर ने बोला था ऑपरेट कराना है. बट आई सेड नो नो, आई डोंट वांट टू ऑपरेट. मैं अभी 21 ईयर ओल्ड हूँ, कैसे ऑपरेशन करा के कैसे होगा. फॉर सम रीजन उसके बाद ही मैं यहाँ मनाली आई, ऐसे ही घूमने के लिए. कुछ कुछ काम भी था. एंड आई जस्ट टोल्ड दिस वन गाय कि मुझे ना घर लेना है, यहीं पे रहने का मन है. तो उन्होंने मुझे एक घर दिखाया. एंड दैट फर्स्ट हाउस, इमेजिन फर्स्ट हाउस, एंड आई सेड यस. I was that little. I would take just impulsive decisions out of nowhere. I was just like, I will not think twice. I will Right. just take the decision. If my heart said, "Oh, this house is for you," I will just take it without Right. even planning anything. And I Absolutely. just love that thing about myself when I was like young. Nowadays, I will calculate. Mm-hmm. कि I ऐसे understand. करना है, ऐसे करना है, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नहीं फायदा होगा. बट बैक देन आई वाज सो लाइक क्रेजी आउट देयर. एंड देन आई जस्ट टुक दिस हाउस. एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी उससे पहले कि यू हैव टू रन. लाइक इफ यू कीप रनिंग, आपका ये जो लिगामेंट टीयर का टेंडेंसी है वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होगी. यू आर स्टिल वेरी यंग, सो यू डोंट हैव टू गेट द ऑपरेशन डन वेरी सून. Mm-hmm. तो मैंने स्लोली स्लोली वापस रनिंग चालू किया. एंड इट स्टार्टेड हेल्पिंग मी सो नाइसली. लाइक Oh, interesting. बहुत अच्छे से मैं उसको वापस से दर्द होना बंद हो गया मेरे. आई Okay. आई यूज्ड टू रन अ लॉट. And then I was just renovating the whole house on my own. Like I had people helping me, but the idea and money was my own. So I spent like whatever savings I had on this house, making this house my dream house. I spent a lot of money. And then eventually, after 2 months of renovating this house, I realized now I don't have savings at all. Mm-hmm. Now I didn't had money. Mm-hmm. Had to turn it into a hostel. Like I asked people on Instagram. That time also I had some followings. Mm-hmm. Like people, because I used to write a lot about my how I am doing these things and that things. So there were people who were following me then also. So I put this story on Instagram asking if we should put this on a guest house or hostel kind of thing. And people were so like up for it. People were so interested. तो बहुत नया था, मेरी Mm-hmm. जगह जो थी बहुत नई. It just picked up. And हमटा Okay. कोई नहीं आता था उस टाइम पे. हमटा हार्डली लोग सोचते थे जाने के लिए. Right. It just picked up and people started coming and the inflow, like income generation हो गया वापस से. Very nice. It was just so nice. I did not plan anything. It was just like I was following my heart out of nowhere. I was just chasing my dreams out of like in the blue. Yeah, I kept doing this. I first few months I didn't had any help also. Like I was doing everything on my own, washing utensils, cleaning sheets, everything I was doing on my own. And then after a few months, I hired somebody because now the business was running. So now I hired somebody. Then I started moving out. I started traveling again. Then it just Instagram picked up for me. And then it like almost 5 years I stayed in that place during COVID also, include COVID also. Oh. Because then like I was here sometimes, I was at home sometimes. And then I left it last year. 2 years back, I left that place. Okay. And now And where now are I you? shifted to another. Shifted to another. Okay. Okay. And
wanted to ask you this. I don't know personally also that you decided to go vegan at some point in your life. You decided to climb Everest also on a completely vegan way of life. What was that point when you decided to be a vegan and why? So for me, I was always a vegetarian. Mhm. Even when at home, anybody can eat whatever. Like my parents don't like stop us from doing anything in specific. I was, but personally, I was a like strict vegetarian. I wouldn't eat eggs also, even though my mom used to tell me to eat eggs, I will not. So for me, I because I was a vegetarian, turning vegan wasn't really difficult per se. But when I turned vegan in 2017. We used to take milk from this family, like just next to my village, and I wouldn't name anyone, but then they just came one day and they said कि हमारे यहाँ बच्चू पैदा हुआ था एंड हमने उसे मार दिया एंड जस्ट वेरी जनरली उन्होंने बोला। मैं एकदम ऐसे शॉक थी कि ये क्या बोल दिया, ऐसे क्यों, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंपैशनेट, लाइक आई हैव डॉग्स, आई विल रेस्क्यू एनिमल्स जस्ट लाइक दैट एंड डू वट एवर आई कैन टू हेल्प एनी वन इन नीड। तो मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग था कि ये क्या बोल दिया। आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, इफ इट इज लाइक नॉर्मली इट हैपेंस और व्हाट इट यूजुअली हैपेंस across the country, across the world. Dairy farming is the worst. It takes a lot of water. The cows exhales methane, and a lot of land they take to graze them, raise them. तो ऑल टुगेदर जब मैंने ये सब पढ़ा तो इट कैलकुलेट टू एनिमल क्रूल्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। एंड डेयरी फार्मिंग एथिकल फार्मिंग भी होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने गाय को रखते हैं, बट देन वो बहुत कम है, बहुत कम जगहों पे वो है। एंड वो एकदम स्मॉल स्केल पे ही रहेगा ये, यू बहुत कांट। small, like राइट। there are also, like I live in a village at the moment, but here also there is a lot of cruelty. Like when you see cows, you will think that, oh, they give milk and they keep it nice, they keep them nicely. Because I live here now, I know कि वो लोग उन्हें artificially inseminate करते हैं, हम्म। so there is no natural process. Then हम्म। they give injections to increase the milk and हम्म। the thickness of the milk and the quantity of the milk, artificially playing with their life cycle, right? हम्म। And when there is a male calf born, they either kill or sometimes people keep and then eventually live in the jungles after a point, like 2 3 months they will keep and then eventually they will live in the jungle, and they inseminate cows after every cycle. एक बच्चा पैदा किया, थोड़े दिन का गैप हुआ, फिर से बच्चा। It's like a cycle and they can't break it because वो दूध तभी देगी जब बच्चा पैदा होगा, राइट। राइट? इतना ज्यादा क्रूल्टी है इसमें, लाइक अनइंटेंशनल क्रूल्टी बोल सकते हो और इंटेंशनल क्रूल्टी भी बोल सकते हो। कई बार उनके पास रास्ता नहीं है कि अब जब मेल मेल काफ पैदा हुआ है तो वो करे क्या। दे ऑलवेज आस्क कि हम करें क्या अब, क्योंकि खेत भी नहीं लगाते, खेत में ट्रैक्टर्स चलते हैं। बट देन ये भी सोल्यूशन नहीं है ना कि आप उनको इस तरह उनके मतलब पैदा तो तुमने किया कराया ना आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके, तो व्हाई डू दैट। बट देन ये it's like a very difficult scenario to understand. They And look at the cows just like a business, yeah, it that is business. that young cow, Hmm. calf, it's like a liability. कुछ काम तो है नहीं उसका। हाँ हाँ, And तो it's नहीं है तो कायदे से उन्हें पालना चाहिए, क्योंकि पैदा वही करा रहे हैं बट देन वो नहीं कराते। सो hmm. मतलब यही है, सब जगह यही है। इवन एथिकल फार्मिंग में भी कई जगह बोलते हैं एथिकल फार्मिंग है, बट बहुत ही कम चांसेस है दैट दे डोंट डू दिस। So how has your life, like Avi, I'm asking this specifically in terms of how you feel physically when हम्म। you stopped consuming dairy products and everything. Has it improved, or how is it like now physically, energetically for you? No, it has become better only. To be honest, I've not seen a lot of changes, but Okay. one change is that I don't feel acidic at all. Like I think Mm, milk makes you very acidic yes. and bloated, which I Yes. don't feel, which I don't Right. feel at all. I used to consume milk a lot Okay. of milk products back Mhm. then, but then ever since I've shifted, I have I have stopped feeling like
very heavy, and I have always felt light. And one of the biggest and goodest thing about being a vegan is that you become very conscious, because now Mhm. you know that you need to think about keeping yourself healthy also. Since you are a vegan, you can be calcium, people say, I don't know, but like you can be calcium deficient, B12 deficient, D3 deficient, vitamin D deficient, like oil deficient, all of that. प्रोटीन कहाँ से मिलेगा ये सब? प्रोटीन, प्रोटीन तो बहुत है, मुझे लगता है प्रोटीन, कोई मुझे बोलता है प्रोटीन कहाँ जाएगा, आई एम लाइक, तुम दालें नहीं खाते हो क्या? इतना प्रोटीन होता है दाल में, दाल में, चिकपी में, राजमा में, स्प्राउट्स और स्प्राउट्स में, ग्रीन्स में, इतना प्रोटीन है। सेसमे सीड्स में कैल्शियम होता है। a lot of things, like it's just इंडियन फूड में वीगन बनाना उसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट्स राइट। जस्ट, इट्स माय नेक्स्ट, मतलब मुझे अभी सोचना भी नहीं पड़ता वो मैं क्या नहीं खा सकती यार, मुझे क्या खाना है। एवरीथिंग इज लाइक सॉर्टेड। नेपाल में हम्म। जाके भी आई डोंट स्ट्रगल एट ऑल, बिकॉज हम्म। वो दाल चावल बनाते ही हैं, राइट। सब्जी बनाते ही हैं, तो बस बचा क्या, मस्त खाना है वो। एंड जैसे आप कह रहे थे ये B12 D3। तो B12, कैल्शियम, D3, ये सब, अब जब आप वेजिटेरियन हो तभी भी आपको जरूरत है कॉन्शियस होने की, बट तब हम क्या हम्म। होता है, हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं, अरे लाइफ ऐसी ही है, चलने दो। बट जब मैं वीगन, व्हेन आई टर्न वीगन, देन आई स्टार्टेड गेटिंग माय चेकअप डन एवरी 6 months. Now I'm like, in a way, even when I'm not training, let's say, like after 2 3 years, if I'm not training for any mountain or whatever, I will still be very conscious. I will still think about if I am like not deficient of anything, if there is anything that I need, iron, magnesium, calcium, whatever, zinc, कोई चीज की कमी नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम, जैसे कि अगर मेरे में, मुझे कैल्शियम की जरूरत है, तो आई विल स्टार्ट टेकिंग आलमंड मिल्क, कैशू मिल्क, टोफूज, सेसमे सीड्स, ये सब मतलब बिल्कुल डाइट में डाल दूंगी मैं, रोज डाइट में, ऐसे रोज ही होता है, बट समटाइम्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू जस्ट डोंट नो। हम्म। तो फिर वापस आके नहीं तो मैं खाऊंगी उसको उतने अच्छे से कि मैं डेफिशिएंट ना हो जाऊं। ऑल दीज नेचुरल थिंग्स डजंट हैव B12, बस B12 नहीं है, उसके अलावा यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। एवरीथिंग इन दीज ओके। नेचुरल। जैसे आपने कहा, मैं खुद आई वुडंट कॉल माई सेल्फ वीगन, वो लेबल नहीं दे सकता मैं, बट आई रिमेम्बर इवन एज अ किड अंटिल आई आज की भी बात करूं, अगर दूध पीता हूं ना, तो एटलीस्ट मेरा आधा दिन खराब जाता है। आई फील हाँ, हैवी। आई या फील लाइक समथिंग इज ड्रैगिंग माई एनर्जीज बैक डाउन। या आई ट्राई टू अवॉइड मिल्क, बट सम थिंग्स लाइक केक और आइसक्रीम, वहां पे नियत खराब हो जाती है। लेकिन लेकिन आई डोंट, like 90% of my life I would say I am a vegan, but और यू डोंट टेक घी ऑल्सो? no, I don't. I mean, अगर मैं घर पे आता हूँ, मम्मी खिला देते हैं कभी कभी, हाँ, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, यस। लाइक फॉर लास्ट 2 years मम्मी अभी मान गई है कि नहीं देना होता मुझे घी। हाँ। उससे पहले जब मैं जाती थी, 2017, 18 and 19 स्पेशली, मैं जाती थी तो मम्मी क्या करती थी, तब तक मैं इंटॉलरेंट, नाउ आई हैव बिकम इंटॉलरेंट ओनली। राइट। इफ आई टेक एनीथिंग मेड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, नो, आई विल हैव डायरिया, आई विल हैव अपसेट स्टमक, आई विल जस्ट फील वेरी लाइक, नो, इट्स जस्ट नॉट राइट। पहले क्या होता था, मम्मी क्या करती थी, जबरदस्ती 1 चम्मच घी डालती थी दाल में, जबरदस्ती, और फिर मानती नहीं थी, एंड यू जस्ट कांट स्टॉप समटाइम्स। नो, यू तो वो कांट। 2 दिन भी ऐसा होता था, तो मेरी चीटिंग हो जाती थी। एवरेस्ट के लिए हम्म। आपने फिजिकली तैयारी कैसे की थी? व्हाट वाज योर फिजिकल रूटीन फॉर योर ट्रेनिंग फॉर एवरेस्ट लाइक? So for me, I didn't specifically took a trainer for like to make a plan for me, but I was just, because I was climbing a lot of mountains before, like I climbed about 10 mountains in India, and then Amadablam, and then I went for Everest. तो मेरे लिए काफी experience था mountain पे. हम्म। So what I need, how I, go low sometimes, and how I need to pick up myself. So it was mental and physical both. हम्म। So I used to start my day with meditation. Then I used to do yoga for an hour. Yoga के लिए instructor था. ओके। And then I used to do my strength training, हम्म। wherein I had divided upper body, core,
एंड लोअर बॉडी मंडे वेंसडे फ्राइडे, All right. वो 1 घंटे होता था. एंड देन आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग. लाइक ये मेरा रूटीन था एवरी डे. After your strength work, you used to go out running, or आफ्टर माई स्ट्रेंथ मोस्टली, okay, okay. थोड़ा रेस्ट करके एंड देन आई यूज्ड Mhm. टू गो फॉर रनिंग. Sometimes I used to do 10 kilometers depending upon how I'm feeling and what is the recovery rate. I used to go for run. Mostly I used to do 10, 5 and 10. Sunday ko sometimes I used to do 20. Beach में Tuesday and Thursday I didn't had strength training. So I used to go for cycling. Okay. दिन में छोटा run and then शाम को cycling. तो Mhm. ऐसे करके ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग था. एंड देन उसके अलावा आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन सैटरडे. एंड संडेज को पूरा रेस्ट, पूरा मतलब नॉट इवन मूव माय ग्लास, वो Mhm. भी कोई और करेगा. Mhm. पूरा रेस्ट करती थी मैं. किसी एक दिन हफ्ते में आई यूज्ड टू गो हाइक, लाइक गेन लाइक 200-300 meters with like Mhm. heavy backpack. Mm-hmm. I want to ask because a lot of people ask me, Kat, that for example, if they are going out for a 5 kilometer run, in Hmm. how much time they should finish that? So, do you think timing is important or being slow and steady is important? Maintaining your heart rate is important. Yes. Like if your heart rate isn't desired, like when I started running in December, my heart rate used to like at around 6 pace, 6.25 6.3 के आसपास होता था. तो मेरा हार्ट रेट होता था 150 से 170 के बीच All में, right. like ऐसे वेरी करता था. Mm-hmm. तो my target was not the pace, my target was to reduce my heart rate. तो Why? करते करते why, अब ये What काफी happens with टेक्निकल that? आंसर्स है. Yeah, because यहाँ पे सब इंटरेस्टेड लोग ही सुनने वाले हैं जो ये इसमें स्पेसिफिकली जो जितना इंटरेस्टेड है. तेज, अगर जैसे मैं मेरा लॉजिक बता रही हूँ, हाँ मैं हाँ, बिल्कुल साइंटिफिकली नहीं बता पाऊंगी. बिल्कुल. तो जैसे हार्ट रेट अगर बहुत तेज हो जाएगा तो आप जल्दी थक जाओगे, हम्म. है ना. मतलब आपको ब्रीदिंग आना बहुत जरूरी है ना, कि हाउ हम्म. ब्रीथ टू कीप योर सेल्फ काम. वेन हम्म. एवर इट जस्ट शूट्स, यू यू कैन नॉट इवन रन फॉर 50 meters. 50 meters राइट. आप खत्म हो जाओगे. तो आप अगर मेंटेन हार्ट रेट पे जाओगे, लाइक वी डू इन द माउंटेन्स, this is what I've learned from the mountain only. Like if we go slow and steady, one step at a time, one step at a time, you can go for 5 hours. But if you go fast and then slow down and then go fast, you will not sustain for even 3 hours, 3.5 hours. So for me, you have to maintain your heart rate and your one, one pace, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, but maintain a pace, I would say. So for me, एब्सोल्युटली. अभी भी मैं जब रन करने जाती हूँ तो मेरा टाइमिंग नहीं है मेरा प्रॉब्लम. माय आइडिया इज टू मेंटेन द पेस एंड द हार्ट रेट. तो अब मेरा हार्ट रेट पेस 6.3 तक ही रहेगा, बट मेरा हार्ट रेट हैज ड्रॉप अराउंड 110 से 30 के बीच में. हम्म. 30 से ऊपर जाएगा ही नहीं, 130. हम्म. तो वो अगर रनिंग करना है फॉर एंड्योरेंस, तो यू हैव टू मेंटेन द हार्ट रेट. Absolutely. And this is a misconception which a lot of people, especially in India, have, that if it is more intense, it is better. If you are able to run 5 kilometers, for example, in 25 minutes, and if you are able to reduce it to 23 minutes, it's an अच्छी. achievement. But I tell them कि तेरा हार्ट रेट क्या होता है. वो बोलते हैं 165, 170. मैं बोलता हूँ तो 5 किलोमीटर से ज्यादा भाग ही नहीं पाएगा लाइफ में कभी. And I Yeah. always say that, when you are going for a hike, you don't go fast. No. You go slowly. So that is how your workout also should be, so that your Yeah. heart and your lungs and your mind gets used to working at a low intensity, but for longer times. Yeah. I think Yeah. this is the Like key. that's what it is. But लेकिन वही है ना, कुछ लोगों के टारगेट्स अलग हैं. अब there are people who are doing fast climbs That's a also. different thing. उनके Yeah. लिए हाँ, उनको अलग तरीके से ट्रेनिंग करना पड़ेगा. So we don't have to look at that. No. But to have a like a normal, how do I say, normal kind of training Yeah. for a mountain, then it will be to maintain the heart rate, to not be tired for, like, if you are running for 1 hour, 2 hour, it doesn't matter how many kilometers. Exactly. The maximum you be out on your feet, the better it is. 100%. And आपने ये speed climbing की बात की. So I have a client right now who I'm coaching, who is the speed climber, and he wants to improve his speed Mhm. climbing.
हम्म। सो उसको स्पीड क्लाइंब करना है, बट फॉर दैट the first 4 months of his training has no speed climb. It is या just to build a very strong aerobic base, slow या slow pace, and long duration. या After that, once your base is strong, on top of that base you can build whatever kind of a structure that you want to build. Yeah, now you know how your body behaves. Now you can Yes, improvise. yes, absolutely. So Right. Prakriti, Hmm. आपको एवरेस्ट क्लाइम करना था, आपने इतनी मेहनत की, हाउ वाज एवरेस्ट फॉर यू? टू बी ऑनेस्ट, हर कोई मुझे ऐसे, पहले जब मैं जा रही थी तो लेट्स से आई एम लकी, आई वुड, जाने से पहले लोगों ने मुझे इतनी अजीब, लाइक ऐसे ना, स्कैरी स्टोरीज वाले वीडियोस यूट्यूब से निकाल निकाल के भेज रहे, ऐसा भी होता है, अवलांच भी आता है, स्नो स्टॉर्म भी आता है। तो अल्टीमेटली आई ऑल्सो नो दैट माउंटेन्स में कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, लाइक हम्म। नॉट नर्वस, मैं यूजुअली नर्वस होती हूँ, डरती नहीं हूँ। बट एवरेस्ट जाने से पहले मेरी डर वाली हालत थी कि ओ शिट, ओ शिट, अगर कुछ हो गया तो क्या करूंगी। तो मैं जाने से पहले सबको बोला कि यू नेवर नो इफ आई डोंट कम बैक। And I met, like for real, I met my dad, my mom, my, like I specially went there to meet them because I was like back of my mind, I didn't know कि क्या हो सकता है। But जब मैं माउंटेन पे थी, and the way I have trained, like I was training in Manali, -10 degrees, waking up at 4:30। मेरा मेरा ठंड टॉलरेंस इतना बढ़िया था कि जब मैं माउंटेन पे थी मुझे ठंड महसूस ही नहीं होती थी। लाइक आइस फॉल ना मैंने एक फ्लीस और एक जैकेट में करे हैं, हर बार मैंने ऐसे ही क्लाइंब किया है। तो मेरे लिए, मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई कैन नॉट से कि हर किसी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा हो सकता है, बट देन फॉर मी इट वाज अ वेरी स्मूथ क्लाइंब। आई डिडंट हैड टू, लाइक मेरे लिए हिकअप्स नहीं थे पूरे क्लाइंब में। एंड yeah, we maintained the pace throughout. There was just one time मेरे हम्म। मास्क, मेरा मास्क जो था, because I never used mask राइट। before, ऑक्सीजन तो मैंने, मास्क। या मैंने मास्क लगाया एंड आई couldn't breathe at 6900 meters, ओके, जब ओके। यूज करते हैं वो हाँ, वॉल से पहले। हाँ। तो मैंने लगाया एंड आई couldn't breathe। आई टोल्ड माय शेर्पा कि मैं नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रही है, दाई मेरे से नहीं हो रहा है। तो ही said no, you are not used to it, you have to try। So I had put it, I was like maybe I don't know how to use it। I struggled, man. Like, imagine putting a mask here and there is no oxygen actually coming in. So या you are blocking. Basically, you are at 6900 meters blocking your या एंड breathing. you are breathing your own CO2, Yeah, like inside I'm only breathing. right? For me, I kept doing this and then putting it back. Kept, because my Sherpa was like ahead of me and he was like, oh, you don't know how to use it. You should have tried putting your mask if you are claustrophobic like that. And I was like, shit, 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 what am I into? Oh, Then we somehow made it to camp 3, 7,100 meters. My head was spinning because we were acclimatized for what? 60, 65, and 6,800 meters. उससे पहले वाला जो yeah, रोटेशन। yeah. मेरा सर घूम रहा है, 7,100 मीटर है, ऑक्सीजन नहीं यूज कर रही हूँ, दुनिया के सारे लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, मैं बिना ऑक्सीजन के हूँ। आई वॉज लाइक, आई टोल्ड माई शेरपा कि ब्रो कैसे होगा, पहले बोल दिया था, उसके बाद 7,100 के बाद मुझे कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो मैं कैंप में बैठी हुई थी बिना ऑक्सीजन के एंड माई शेरपा सेड समथिंग, देन आई कुडंट रिप्लाई बिकॉज मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो शेरपा को लगा इसका कुछ तो दिक्कत चल रहा है, आई डोंट नो, लाइक उसने तब सोचा कि इसकी हालत खराब हो रही है। Hmm. तो उसने मुझे अपना मास्क दिया, उसने मुझे एक्सचेंज किया मास्क और बोला कि इससे ट्राई करो, बट इसको हाथ मत लगाना, बिकॉज मैंने, ओ शिट, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये करते करते ऊपर हाँ, नीचे मास्क टूट गया। okay. आई वॉज एट 7,000 meters, 100 meters आई कुड सी कैंप, बट मेरा मास्क टूट गया। एंड आई वाज लाइक अभी क्या होगा मुझे, क्योंकि मतलब पता ही नहीं था एंड दिमाग चल ही नहीं रहा था। तो शेरपा ने बोला किसी तरह कैंप 3 पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। Okay. फिर जाके मेरा मास्क तो टूटा हुआ था, तो शेरपा ने मुझे अपना मास्क दिया, बोला लगाओ एंड डोंट टच योर फेस, डोंट टच, आई विल जस्ट पुट इट एंड यू जस्ट हैव टू ब्रीथ। I said, okay. Within 5, 6 minutes, I started feeling back again. Like I could feel now the Hmm. oxygen was flowing back, right? Like दिमाग में जा रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा शेरपा को कि दाई ये तो चल रहा है।
तो वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने चेक करना चालू किया, देयर वाज दिस होल इन माय पाइप, Oh my. this hole, like very little hole. And I freaked out. I was like I was telling you there was something wrong. And then he said, I'm very sorry, I didn't know, like I did check the mask and stuff like that. Then he eventually, went out and fixed the mask for himself, gave me his mask, the correct one. And then I started feeling back again. I was just, Hmm. it was the summit push, no, so I couldn't, Yeah. it was just not possible that I could do anything that stupid. Yes. फिर सांस वापस आई, अच्छे से फील करने लगी मैं. Then we were like good to go again tomorrow. Awesome. बस और एक हफ्ता, उसके अलावा एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ. वी रीच द सेवन साउथ समिट. साउथ समिट पे हम 4:30 बजे पहुंच गए थे. इट वाज लाइक पिच डार्क. एंड आई टोल्ड माय शेरपा कि यार ब्रो ऊपर जाके फोटो नहीं खींच पाएगी तो अभी हम रेस्ट करते हैं. Cause for me it was like I had to, like if I'm feeling strong enough, like I was feeling really good, like I could sense everything, I could see around, click photos. If I can do that, then why not wait and click better pictures than just going there and doing nothing. Hmm. So we had waited there for some time before we started again, and then eventually we reached around 5:53. Okay. And how was it to finally reach the top Was of the world? beautiful. Like for me, I like there was this one point when I just stepped to first feet near the summit, and I just could see like Tibet, sorry, Tibet there. I was just like blown. I didn't know how to behave, how to Hmm. react, and I was just like stunned. I couldn't speak. My Sherpa said, "Congratulations." I did not respond for like 2 minutes or so. I was just like, I was just happy. For me, it was exactly reverse because I climbed from China. Huh? So that landscape I was constantly looking at. Mhm. Suddenly, when I reached the summit, the whole Nepalese side, Lhotse, Yeah. Makalu, that Makalu. that revealed itself, and I was like, ये तो मैंने पिक्चर्स और वीडियोस में देखा है लेकिन रियल में इतना और 3D व्यू आता है ना. And Lhotse looked so much bigger, Makalu looked so much bigger because Yeah. when you were It's climbing from, also close. yes, yes, and Yeah. when you were climbing from China side, not even once you see Lhotse or Makalu because the Yeah. route only meets at the summit. So Mm-hmm. मेरे लिए वो नेपाली साइड का रेवलेशन वाज लाइक ऐसे मेरे आंखों मेरी आंख उसको समा नहीं पा रही थी. बस. Yeah, for me it was just like this. And that curve, no? Like everybody says that there's this curve, पूरा जैसे GoPro में दिखता है, यस, फिश एक आई curve. में, हाँ. Yeah, I could see that like slight curve यस. without GoPro. I was just यस. like blown because my sister told me कि ऐसे curve दिखेगा, and I was like फालतू बातें बोल रही है, फालतू बातें बोल रही है. But when I saw it, I was like, whoa! And that sunrise also, यस. like when it's like this. Have you seen that? Of course, I Uh, reached exactly at sunrise time. oh, so it was just like so The like point. shadow. Yeah, it was so pointed. It was so nice. Yeah, Yeah, बिल्कुल very बिल्कुल good. बिल्कुल. मैं. जब हम पहुंचे थे जब हम पहुंचे थे तो इतने लोग नहीं थे, लाइक वेरी फ्यू पीपल वर देयर. बट विद इन लाइक 10 minutes ऑफ स्टेइंग देयर, इतने लोग आ गए थे, like one after the other one. But everybody left in like 5 minutes. Like Hmm. everybody just came, clicked picture and went. And I stayed there for almost 50 minutes. Can you believe that? 50. ओ तेरी. Yeah. Okay. Okay. And I changed my bottle also at the summit. Oxygen. Wow. मेरा, पता है उससे पहले ना मैं बहुत एनर्जेटिक थी कि ओ माय गॉड ये हो गया वो हो गया, ये तो कुछ भी नहीं था. क्यों नो, यू हैव दिस रश, लाइक अ रश इन योर ब्रेन. तो मैं ऐसे सोच रही थी, मास्क लगा हुआ था, एंड देन सडनली आई वाज लाइक ब्रीदिंग लास्ट ब्रेथ्स एज इफ मेरी सांस जा रही है. तो आई सेड माय शेरपा कि भाई ये जल्दी से बद दो. तो ही केम एंड स्टार्टेड चेंजिंग, एंड इट टुक like almost 60 seconds or like maybe 2 minutes चेंज होने में, क्योंकि ऊपर हवा भी थी, Right. आइस जम भी थी. Right. एंड
in those 2 minutes, I was literally begging for oxygen. Yes, I I was know. like, I am gonna die. I am gonna die. Please give me. एंड जब मैंने वापस लगाया ऑक्सीजन तब मुझे लगा ओ शिट, ये जो भी हुआ है ये सिर्फ ऑक्सीजन की बेसिस पे हुआ Hmm. है. इट्स ओनली इजी बिकॉज आई वाज विद ऑक्सीजन. इफ Hmm. इफ आई वाज विदाउट, I couldn't have done it. I couldn't have. Hmm. I have like high regards and respect for people who are climbing without supplemental oxygen because It's a whole different game. And it's and it's nothing close to what we do. and like I started using oxygen when I reached Camp 1, which is 7,100 meters. Camp 3 is side because I climb from Tibet. Hmm. Before that, 7,100, very difficult, slow, and band bus. Naturally, Hmm. next day when I started using oxygen, it was like, अरे मैं तो भाग रहा हूँ, सब भाग रहे साले. जो जो एक दिन पहले रेंग रेंग के चढ़ रहे थे ऊपर, वो Yeah. साले भाग रहे सबको ओवरटेक करके. And that's when I realized कि यार what I am experiencing in my mask, it's not the reality. You are experiencing at least 2,000, 3,000 meters of lowered altitude in your mask. Yeah. And that's when I promised myself that next expedition, whenever or whichever expedition it is, I will at least try to do it without oxygen. Yeah. And because I want to experience the real thing, real 8,000 meters क्या होता है, वो तो Yeah. पता ही नहीं है बहुत लोगों को. Yeah. No, बहुत लोगों को क्या, my majority does it with oxygen, Majority. you know. Exactly. No, I Exactly. can't even think about it. It's just like out of my I limits or know. No, but anything. I'll tell you one thing. You felt like that because you had already been using oxygen for 2.5 days. But if you are not using oxygen, it's not a shock for your body because you are using and suddenly it went away. Yeah. That's why you maybe felt like that. But if you are not using, slowly, you know, Make, but then it's a lot of, it's thrice the efforts because it there were is. two people Yes. in my team who were climbing without oxygen, Okay. and they did like almost 5 6 rotations over. I would say more than 5 6 rotations actually. Yeah, I So mean, yeah, it's a, like physically it can kill you in ways you can never imagine. Like it yeah, will like exhaust you. yeah, you need a very different level of physical and Very next also mental preparation. And level. ये एक चीज मुझे पूछनी, ये बात आपने हमने उठाई तो उससे मुझे एक चीज याद आई. I call them keyboard mountaineers, who Yeah. have a lot of people who have not done anything in their life in terms of mountaineering but have opinions of all sort. Like, oh, तूने तो ऑक्सीजन यूज किया, तूने तो फॉर एग्जांपल बेस कैंप टू बेस कैंप हेलीकॉप्टर यूज किया. तो Yeah. मतलब ये बहुत. अभी जैसे फॉर एग्जांपल निम्स दाई की बात करें, तो आफ्टर डूइंग सच अ क्रेजी फीट in 6 months, 6 days, 14 peaks, there was some bloody, barking dogs who said that, oh, you used heli between base camp. Arey? Oh. So, नहीं, ये तो करना पड़ेगा ना उसको. no, so, what do you have to, because even to us, even to me at least, I don't know about you, but a lot of people say, oh, you use oxygen, oh, you use fixed line, oh, you use Sherpa. तो मैं बोलता हूँ कि चलो, ओके, मैं शेरपा यूज नहीं करता हूँ, ऑक्सी यूज नहीं करूंगा, कुछ यूज नहीं करूंगा, कल दूसरा कुत्ता आके बोलेगा कि तूने डाउन सूट पहना, नंगा क्यों नहीं क्लाइम करता. सो वे है ना. अरे अरे तो इन लोगों को जब मैं जा भी रही थी ना तो एवरीबडी सेड why are you going to Everest is very easy. That's another No, thing. Yeah. so my answer was, have you been there? Right. हैव यू बिन देयर? मैंने बस इतना, एक आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने ऐसे पूछा मुझे, तो व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट. आई वाज लाइक आई एम अटेम्प्टिंग एवरेस्ट दिस अप्रैल. सो ही वाज लाइक, ओ एवरेस्ट क्यों जाना है, एवरेस्ट तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल करो. आई वाज Hmm. लाइक, हैव यू बीन देयर? Bas. And he just got stunned. He was like, no, I've not been there. I And said, how come you're telling me all this easier? yes, exactly. In there, and you tell me, अगर आप मुझे बोलोगे कि एवरेस्ट इजी है, I would still believe you. Yes. No, I will Yes. still believe you कि आप Yes. गए हो, आपका एक्सपीरियंस है. Yes. You have not been there. Who are you to comment on Yes. what I am doing in life?
यस, कहीं से कुछ सुन के आप किसी को बोल रहे हो ये तो सही नहीं है। या अगर एज यू राइटली सेड, अगर किसी ने एवरेस्ट किया है और वो बोले कि एवरेस्ट इजी है या मत जा, तो मैं सुनूंगा। लेकिन आपको एक मजे की बात पता है, जो भी एवरेस्ट गया है ना, वो कभी ऐसी फालतू बात नहीं करेगा, नहीं, है ना। कोई नहीं करेगा, ये तो नहीं बोलेगा कि आसान है। यस। मैं भी मेरे दिमाग में भी ये था ना कि आसान है। मैं ऊपर टॉप पे थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि ओह ये तो बड़ा आसान था। ऑक्सीजन निकलते ही सच्चाई पता चल गई ना। हम्म। लाइक एब्सोल्युटली। like the body and mind can't even align well with each other without oxygen. It's that less. एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। एंड ये एंड करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, जो आई थिंक बहुत लोगों का, चाहे वो पहाड़ क्लाइंब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, it is a much of a, a living struggle in their life. It is the struggles they face within themselves. Mhm. You can call it mental struggle or emotional struggle, you name it in whichever way, but people nowadays, especially the younger generation, when they have access to the entire world, Access they to it. see entire universe, yeah, they bloody see that, oh, this person is doing this, or मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, I'm good for nothing. And this a lot of friction within themselves. And I'm asking you because you are very open with how you are feeling in public. Yeah. So when you have such low days, which everybody does, अगर कोई बोले कि I don't feel like that, वो मैं उसको मुंह पे बोल सकता हूँ तो झूठ बोल रहा है, Mhm. झूठ बोल रहा है। हाँ, the difference is when you feel it, how fast you come out of it. That is what separates. So how do you deal with such low days, and what are the practical ways in which you can advise people to come out of it from your own experience? So abhi bhi, because I have a history of being in depression and Okay. like having anxiety with like small things also, like Mm-hmm. just small trigger points. I know they are stupid. Like I know it's coming, right? Mm-hmm. Right in the moment I know it's coming, but I can't stop it. Okay. And it's like it used to be a loop of Mm-hmm. trigger after trigger, trigger after trigger, and I didn't know how to come out of it Mm-hmm. until I started being physically active. Like Mm. now I have a routine. I still in a month at least 2 days will go into zone where I don't feel myself. I don't feel like doing anything. I just want to, quit everything. But then now I know what are these trigger points, how does it feel every time, and how to come out of it. Like at least try to come out of it, if not just come out of it eventually. तो मैं क्या करती हूँ, पहले पहले मैं कुछ किसी को बताती नहीं थी, तो वो मेरे अंदर ही फंसा रहता था। Mm-hmm. कुछ भी जो भी एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, इट कैन बी एनीथिंग एज स्मॉल एज somebody didn't do something according to how you said, and then you just go on the loophole. तो उसके लिए आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट लाइक टू पीपल हु वुड नॉट जज मी. लाइक आई विल कॉल समवन who will listen to me and just me. Just Mm-hmm. listen. Mm-hmm. Don't give me any suggestion. Don't tell me what to do. I am Yes. smart enough. I Yes. know I have lived life. I know what I'm. But there are situations where you don't know कि 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 वो कैसा फील कर रहा है. So just listen, and you need those at least one or two people in your life, and you will have, like, I think everyone will have at least one person who you can call. So for me it's my sister, who I can just call, and if I just have to say whatever I can say, and I know I will, if I say everything, I will feel better. I won't come out of it, I know, but I will start to feel better, and my brain will not be clogged like it was. Mm-hmm. And if at all this is also like not at all helping me, then I start writing everything I'm feeling, like Mm. every little detail I will put on the this thing on the diary, and I will read what I've written. So Mm. ultimately जो मैंने लिखा है उसको जब मैं पढ़ूंगी, तो वो मेरे दिमाग को वापस से बताएगा कि मैंने क्या किया. And if not anything, I will give solution to myself ultimately. So there are times when I'm like stuck in a situation wherein, like for example, जब मैं एवरेस्ट जा रही थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं पैसे अरेंज कैसे करूं, बिकॉज मेरे लिए सिर्फ अरेंज करना नहीं था,
अगर फंड रेज का पैसा पूरा नहीं हुआ और मैं पैसा अरेंज नहीं कर पाई तो फंड रेज के पैसे का क्या करूंगी? Oh, So there was so much tension in right. my brain that Mhm. I used to write like what pros and cons of every situation, then what I can do, what is not possible. Then I used to read again. फिर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था ओ शिट आंसर तो यही था, मुझे पता था क्या करना है, इट्स जस्ट Hmm. दिमाग में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि दिमाग में सब एक साथ कच्चर कच्चर हो गया। And I think ये जो कचर कचर होता है दिमाग में, it really gets sorted out when you actually write it down physically. या या People don't understand the power of this, writing it power of down. writing, power of writing is just Hmm. like, or you are speaking or you are Hmm. writing. When you Hmm. start writing, आधा काम तो वहीं पे खत्म हो बस जाता 100% है। राइटिंग वो लिखने का पुश चाहिए होता है बस, पुश दिमाग चाहिए में होता है। इतना चाहिए कि आप लिख सको। दिमाग भी ऐसी कुत्ती चीज है ना कि बोलता है अरे क्या लिखना, मैं सोच सकता हूँ ना इसके बारे में। वो सोच सोच के पाइल अप हो जाता है, एग्जैक्टली। एक चीज नहीं, वो पाइल अप होता रहता है होता रहता है होता रहता है, इवेंचुअली जस्ट बर्स्ट आउट। यहाँ पे मैं ये बात मैंने कभी कहीं भी किसी के साथ भी शेयर नहीं की है। अभी आपने ये बात उठाई तो इसके लिए मैं ये शेयर करूंगा, बिकॉज इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, आई होप। दिस राइटिंग डाउन, आई वॉज वेरी अगेंस्ट राइटिंग, आई स्टिल, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक आज भी है मेरे मन में। बट एक बार जब मैं ऐसे फेज में था लाइफ के कि अब तो लगता था भाई अभी कुछ नहीं करना बस, एंड तब मुझे ऐसे किसी ने एडवाइस दी कि तू लिख। साला लिखना स्टार्ट किया मैंने, रुका ही नहीं जा रहा लिखना, रुका ही नहीं जा रहा, रुका ही नहीं जा रहा, इतना भरा पड़ा था, इतना भरा पड़ा था। और पूरी 200 पेज की पूरी बुक मैंने भर दी, ठीक है, 4-5 दिन में। फिर मैंने क्या किया, मैं टेरेस पे गया, बुक को आग लगा दी, है ना। आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड थॉट कि साला ये सब निकल गया, ये हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। या ये है ही नहीं, अभी गया, ये जो आग लग गई ना, गया, सब गया मेरे अंदर से। एंड इट लिटरली वाज सच अ पावरफुल एक्सरसाइज टू डू। या And yeah, I mean, and the other thing I see you do is, like you mentioned in the start, yoga and meditation. या So, how does that help? And first of all, what kind of meditation do you do? And secondly, how has this specifically helped you getting mentally and emotionally balanced? but so meditation and yoga has been a part of my life on and off Okay. since ever since I've shifted in the mountains. बट अभी कुछ पिछले साल से मैंने इंस्ट्रक्टर के साथ करना चालू किया है, उससे Okay. पहले मैं यूट्यूब फॉलो करती थी रैंडम कुछ भी। Mhm. तो इट्स आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हेल्प, बट देन व्हेन यू आर with the instructor, with an instructor who is like guiding you through, then you are in a safe space wherein you know what you're doing, and if you don't know, at least the instructors know Hmm. कि वो क्या करा रहा है। तो आपका अल्टीमेटली आप यहाँ से बिल्कुल खाली होते हो एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग। तो वो Right. आई थिंक ऐसा लगता है अब मेरा रूटीन में है कि मुझे इंस्ट्रक्टर होगा तो मुझे ज्यादा बेटर इफेक्ट्स होंगे। 100%. एंड फॉर दैट आई पर्सनली डू मोस्टली हाथ योगा, Mm-hmm. power also and Mm-hmm. stamina also, and a Okay. lot of stretches with like stretches में mobility and stability पे भी काम करते हैं, Mm-hmm. which is really important. Mobility इसलिए जरूरी है when we are climbing mountains, and we need like the joints and everything to be really like flexible in Yes. ways कि Yes. कुछ छोटा सा भी अगर फॉल हो कुछ हो तो ऐसा ना कि एंकल मुड़ गया, ओ जी टूट गया, हाँ, 100%. स्प्रेन Yes. आ गया कि आपका स्प्रेन चला हुआ है बहुत दिनों तक। मैंने इतना अच्छे से अपने बॉडी को एडजस्ट कर लिया है अब कि अगर मैं गिरती भी हूँ तो इतनी जल्दी मुझे चोट नहीं, मतलब हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मुझे 5 दिन लग रहे हैं रिकवरी के लिए, 10 दिन लग रहे हैं रिकवरी के लिए। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बच्चों को देखो, लाइक इन्फेंट्स और हु आर बिलो 6-7 years of age, they fall so much but they या don't get injured या because their body, they've not screwed it up. स्क्रूड इट अप इन अ वे, बैड लाइफस्टाइल नहीं है ना कि Yes. ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे बैठ गए हैं, वो Yes. नहीं है ना उनका they उनका लाइफस्टाइल बचपन से तो अच्छा ही है, हाँ, फिर इवेंचुअली बड़े होके खराब होता है। and then we start, we screw it up and then we unscrew it with exercise and yoga and meditation. या योगा योगा कैन डू वंडर्स। Hmm. एंड आई थिंक वो हमारे अगर लाइफस्टाइल में है तो Hmm.
इट कीप्स अस फोकस्ड, आई वुड से। Hmm. एंड हमारे बॉडी में दर्द कम होते हैं तो हमारा Hmm. फोकस, हमारी एनर्जी राइट जगहों पे जाती है। Yes, 100%. अभी अभी जैसे मैं जब योगा छोड़ती हूँ तो क्या होता है, कहीं कहीं पे पेन चालू हो जाता है, कहीं पे कुछ दर्द चालू हो रहा है, ज्यादा चल रही है तो कुछ हो जाता है। तो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं वो उधर उन पार्ट्स में जा रही है, rather देन व्हाट यू हैव टू डू। Yeah, तो योगा, right. आई थिंक एवरीडे बेसिस पे योगा इज इम्पोर्टेंट। एंड meditation, Mm-hmm. meditation can calm you down. If you do that first thing in the morning, it helps a lot. In which, Hmm. like, so I do very basic, I don't do guided. I do very basic, wherein I focus here, right in the middle of my eye, and I do it for 15 minutes. I don't Mm-hmm. play any song, I Mm-hmm. don't do any chants, nothing. Mm-hmm. I just focus here, and it just aligns all my energies to one day. It Hmm. just calms me down in ways that nothing else can. So I think starting your day with something like this can actually make your day go well, in comparison to if you don't start, then you are ultimately Here in a and there. yeah, in a fucked up mess, and you don't know what to do. You don't have focus at all. So I think yes. Absolutely. And you know, जब दो पहाड़ के प्रेमी बैठ के बात करते हैं, it can go on for hours and days. But I would like to do this again with you. When I meet you face to face, I think we can speak about some deeper aspects of life. Just to end this on a light and happy note, करण जौहर वाला रैपिड फायर करते फटाक से ना, 2 मिनट में. Come on. ठीक है, ठीक है, सो ठीक है। सो सोचना नहीं है, ठीक है. विच इज योर फेवरेट मूवी? I don't watch movies, but Into the Wild. इनटू द वाइल्ड. ओके, विच इज योर फेवरेट बुक? खालिद हुसैन की काइट रनर। Ooh, hi-fi. Which is the current artist or song that you are obsessed with? Calm down for some reason. Oh no, no, it's a Because I very came from Africa. okay. Okay. You are one mentor in mountaineering. Nature, the mountains. I don't No, have anyone I look up to be honest, really. I haven't found that mentor so far. one uh, person in mountaineering who inspires you just by looking at him or her. Christian, Christian. Christine. Okay. She was on the podcast a few weeks ago. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I met her in Amadavalam. Okay. Okay. Which is your one dream destination in the world? Mountain, sea, whichever. One place where you wish to go. Destination. Dream I have lived. Now next would be to dive in Galapagos. What is that? So there's these islands in South America, Ecuador ke paas. Uh-huh. Then you can dive. So I want to go diving there. Okay. Okay. 14 peaks or 7 summits. Which comes more strongly from within you? Both of them are not in my list, but then I think Okay. I will be able to do 7 summits and not be able to do 14 peaks because Pakistan. Yeah. So 9 peaks. Indians can do 9 peaks. Nine Hamara, peaks, yes. So yeah. 9 peaks, I would say 9 peaks would be my priority, but I will do 7 summit before. Okay. Okay. If money or logic was not a barrier, which Mhm. is that one crazy thing which you would like to do? For example, my crazy goal is to climb the highest peak on Mars, 28,000 meters के आसपास कुछ तो है वो. So like if logic was not a barrier, if nothing was a barrier, what is that one crazy thing you would like to do in life? Maybe go to Everest and do snowboarding from there. I will not go out of my planet, Mm-hmm. but then that will be one of the things that if finance and logic wasn't there, I would just probably snowboard from Everest. Okay. If one person who is dead, Mm. if you have the power to raise them back to life and ask them one question, who would that person be and what would that one question be? Oh my God, ये From ये from rapid fire में कैसे हो सकता from है? from Gandhi to Buddha to any mountaineer that you like anybody. गांधी को पूछूंगी तेरा गांधी को पूछूंगी कि आपका, मैं दोबारा बोलती हूँ, आप वो मत डालना, काट देना। I will ask Gandhi
कि why is your face on every note till now? Okay. Anyways, so बहुत अच्छा लगा बात करके, and if one parting advice to anyone who young person who is watching and trying to get into climbing mountains, क्या बोलोगे उस I think they इंसान don't take को? mountaineering lightly at all. I think you should put in your 100% in every aspect, from physical, mental, and financial. And if you start, like, if you think you want to be a mountaineer or you want to climb mountains, you have to fully get into it. You can't be half-hearted. You just can't do it for the sake of it. कि चलो एक mountain climb कर देते हैं, कि दो mountain कर लेते हैं. It's just like, you're putting your life and others' life at risk in that sense. Because if you want to become a mountaineer, if you climb big mountains, you have to train nicely, and in the mountains as well. You just can't be like, oh, हमने 50 किलोमीटर दिल्ली में run किया है तो हम mountain के लिए तैयार है. You just Hmm. can't be. You have to climb in the mountains so that you know the possibilities of downfalls and good times. You know where you are at risk. How do you want to get out of out of that risk zone? How difficult mountains are, and the kind of challenges mountains can give you. So I think anybody who is wanting to be a mountaineer, I would say do it with passion and not just out of fashion. A lot of people are getting, like, अभी recently मैंने किसी का reel देखा, and this guy wrote that this is the peak, and they took a drone shot, and I was just surprised. It was not even a peak, it was a hill, and they are mentioning peak. I have climbed a peak. I have climbed an unnamed peak. It was not even a peak. ठीक है. I was For like, them, in their experience, it was a difficult no, trek. no, for me, like, like, people have spoiled traveling completely. Hmm. Like, they have made traveling accessible in ways, like, because because it was easy in a way. Hmm. तो अभी सबके लिए accessible है, which is also good. But then माउंटेनियरिंग को ऐसे नहीं बना सकते ना. माउंटेनियरिंग हैज अ लॉट ऑफ difficult parts also, life risking parts also. You just can't take it lightly and say, oh, ऐसे ही हो जाएगा ये तो. You just can't do that. If Hmm. you are saying कि if this guy said कि मैं अकेले गया एक अननेम पीक क्लाइम करने, कल को कोई पागल चला जाए फिर, it Mhm. just can't be right. Mhm. तो Mhm. वो थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखनी चाहिए, सेंसिटिव Hmm. सेंसिटिव अप्रोच होनी चाहिए Hmm. कि माउंटेन्स आर नॉट जस्ट योर प्लेग्राउंड, दे आर माउंटेन्स. Yeah. Yeah, they will when they start playing with you, तब समझ में Yeah, आएगा. yeah, exactly. So it's not you, they are not your playground. Yeah, absolutely. I wish we could keep going on, and we will do it when we meet face to But we face. will. Yes. But thank you so much, Prakriti, for your time, and दिल से wish you the very best for Kanchenjunga. Thank you. Be safe and have fun. Thank you so much. It was so nice to catch up with you after like long time. Long time. And हमने कितनी जल्दी decide किया. I am so glad कि हमने कर लिया ये. कर लिया. And Yes. यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, go to Prakriti's Instagram and just wish her all the best. Send a lot of good vibes. And yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Bye. See Bye. you. Bye. Okay.